Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will talk about the function using C++. What is a function? In your first semester you already are aware about the function. We have discussed them in brief detail while studying the chapter of function. Function is actually a small group of statement which performs a specific task, right? Here in the slide you can see the block diagram for the function. In the rectangular shape you see that there is a function f and it is taking an input x from the outside of word, and then after processing that input, this function results you the output f of x. This is the block diagram for the function, right? Okay, now going to the explanation of this concept function using C++ in much detail, we move to the next slide. Okay, a function is a group of statements that together perform a specific task. Every C++ program has at least one function, which is main. You are already aware of this concept, that function is a group of statement that together perform a specific task. ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हम कंबाइन एक यूनिट में रखते हैं उन स्टेटमेंट्स को, और वो स्टेटमेंट्स कंबाइनली एक टास्क परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, दैट इज़ नॉन एज अ फंक्शन। C++ का हर प्रोग्राम जो है ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो अदर फंक्शन, always there will be a one function and that single function is known as a main, ठीक है। आपके पास C++ का हर प्रोग्राम जो है उसमें at least one function लाजमी मौजूद होता है, and that one function is the main function. We have been discussed all these in our previous lectures. Okay, why we want to use function, ठीक है, or how it is helpful for us to use function. Function are used for divide a large code into module. Due to this we can easily debug and maintain the code. For example, if we write a calculator program, that time we can write every logic in a separate function. For addition sum, for subtraction sub, any function can be called many times, ठीक है। जैसे आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है कि फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं। वी डिवाइड द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स. Those smaller units are much more understandable, they are much more readable as compared to the large program, ठीक है। हम उनको फंक्शनलिटी के बेस पे डिवाइड कर देते हैं टास्क को। जैसे एग्जांपल में कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर राइटिंग an application program for the calculator, so in the calculator there are so many different type of tasks like addition, subtraction, multiplication, log, sine, cos, trigonometric functions. Various types of tasks are there in the calculator. So if you are writing all these tasks in a single program, it will be difficult for you to understand and it will be difficult for you to debug it, right? So if we divide the same program into tasks डिपेंडिंग ऑन द टास्क स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। जैसे हम एडिशन के लिए जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं उनको हम ग्रुप करें एक यूनिट में, सब्ट्रैक्शन के लिए जो कोड लिखा है उनको ग्रुप करें इन अदर पार्ट और इन अदर यूनिट, एंड वी गिव देम सम नेम. So our whole large program will be divided into various sub units, and those sub units are easily manageable and they are easily debugged, ठीक है। हम उसको easily debug कर सकते हैं, हम उनको
मैनेज भी इजीली कर सकते हैं और हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होगी। इसलिए तो इट मीन्स के फंक्शन जो है इट विल अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ कोड एज वेल, राइट? So here we have look on of advantages of a function. Let us see. Creating function in a program is beneficial. They avoid repetition of codes. जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है उसकी बार बार ज़रूरत हो रही है अपने एप्लीकेशन में, सो यू कैन सिंपली राइट अ फंक्शन फॉर इट एंड यू कैन कॉल दैट फंक्शन एज मेनी टाइम as you want in the program, right? So it will avoid the repetition of your code. Okay, next advantages increase the program readability. जैसे मैंने आपको बताया, if we divide the large program into sub programs and subtasks, so it will increase the readability. We will understand the application coding in a very easy manner, and if we want to search a particular block of code, we can easily search it just by checking the name of the function, right? Okay, so function का एक और एडवांटेज क्या है कि डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनी सिंपलर प्रॉब्लम्स. Suppose if we are going to write a calculator program, so there are lots of different tasks in the calculator program. So we don't know from where we have to start. So if we divide this large task into smaller subtasks and we write code for each task individually, and we debug that each task individually, it will be very easy for us to write or manage a larger task in a very organized way. Reduce chances of error. Yes, functions will also reduce the chances of errors. Once you write a function and you debug that function, um, so now there is no need to debug it again and again, right? So you can easily check your program for errors because your program is divided into functions. ठीक है, तो आप लोकेट कर सकते हैं एरर को इजीली. आपको इजीली पता चल सकता है कि भाई आपके कौन से फंक्शन में एरर हैं और कौन से फंक्शन के किस लाइन में एरर है. कंपाइलर जो है वो फंक्शंस में जब आपको एरर मैसेजेस देगा तो वो आपको साथ साथ इन्फॉर्म करता जाएगा कि भाई किस फंक्शन में एरर आ रहा है. तो बजाय इसके कि अगर आपके पास एक बड़ा मेन प्रोग्राम हो और उसमें आप एरर फाइंड आउट करें, तो इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, तो आपका जो एरर लोकेशन है वो इजीली लोकेट हो सकेगा. कंपाइलर जो है जो आपको एरर मैसेज देगा वो मोर कम्प्रीहेंसिव होगा, तो यू कैन ईजिली लोकेट योर एरर एंड यू कैन ईजिली डिबग दैट एरर, राइट? Okay, makes modifying a program becomes easier and makes unit testing possible. मैंने आपसे कहा ना कि चूँकि आपने बड़े प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया लार्जर स्मॉलर टास्क में, सो स्मॉलर यूनिट्स को मैनेज करना, उनको टेस्ट करना, उनमें एरर्स फाइंड आउट करना, उनको अरेंज करना, ये इजी है बजाय इसके कि आप तमाम के तमाम कोड जो है उसको एक फंक्शन में या एक ही प्रोग्राम में रख दें. ठीक है, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस विच फंक्शन विल गिव यू इफ़ यू आर यूजिंग फंक्शन इन C++. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन. हमारे पास कौन कौन से फंक्शन के टाइप्स हैं. There are two type of functions in C++ language. You are aware of them: a library function or predefined function, and the second one is user-defined function, right? Library function and user-defined function. Now look at see what are the library functions. Library functions are those which are predefined, right?
in C++ compiler, right? They are available in the library of the C. The implementation part of predefined function is available in library files that are .lib, .obj, .lib or .obj files. Okay, and they are contained in the pre-compiled code like printf, scanf, हो गया math.h में sin, cos, trigonometric function, power function. They are all predefined functions. They are all stored in the C++ library. You just only going to use them. You are not going to implement them. They are already implemented by the सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जो सी प्लस प्लस के डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने पहले ही से लाइब्रेरी में आपके लिए अ लॉट ऑफ फंक्शंस रखे हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं. एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज फंक्शन. यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ दैम, राइट. अगर आपको किसी फंक्शन की ज़रूरत होती है, यू विल include that particular header file in your program and you can use or access that function in your code in your program, right. ओके, लिमिटेशंस ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन. जब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हेन द लाइब्रेरी फंक्शंस आर अवेलेबल टू यू, देन व्हाई देयर आर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है, तो हियर आर सम लिमिटेशंस जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ साथ हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की भी ज़रूरत होती हैं. All predefined functions are contained limited task only, that is for what purpose function is designed for, same purpose it should be used. ठीक है, यानी अगर आपने एक फंक्शन आपको प्री डिफाइंड मिला है, जैसे पावर को कैलकुलेट करना, एक्स रेजिंग वाई को कैलकुलेट करना, तो इट विल ऑलवेज परफॉर्म दिस स्पेसिफिक टास्क. वेन एवर यू विल यूज इट, इट विल परफॉर्म दिस टास्क, राइट. सपोज़ पावर फंक्शन है, वो एक्स रेजिंग 3 को कैलकुलेट करता है. सपोज़ आपको गिवन है लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जो कि स्क्वायर कैलकुलेट करता है या क्यूब कैलकुलेट करता है. ठीक है, और आपको चाहिए एक्स रेजिंग एन. ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास एक फंक्शन हो, जब भी मैं उसको 2 वैल्यू दूँ, ठीक है, तो वो मुझे उसका पावर दे दे. यानी एक एक्स और वाई दूँ तो एक्स रेजिंग वाई कैलकुलेट करके दे दे. अब लाइब्रेरी में ये फंक्शन मौजूद नहीं है. ठीक है, एक्स रेजिंग 2 या एक्स रेजिंग 3 तो कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि वो प्री डिफाइंड आपको अवेलेबल है. सो इस फंक्शन ने आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, राइट. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द लाइब्रेरी फंक्शन जो है दे विल कंप्लीट या फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, राइट. ज़रूरी नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी में जो मौजूद फंक्शन है वो है. ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट इसके अलावा भी हो सकती हैं. तो इट इज़ नॉट necessary that all the required functions they are available in the library. As a programmer, we do not having any controls on predefined functions. Implementation part is there in machine readable format. Okay, so as a programmer we cannot change those functions, राइट. यानी आपको मैंने भी बताया ना कि आपके पास एक पावर का फंक्शन है, वो सिर्फ स्क्वायर या क्यूब कैलकुलेट कर सकता है. तो एज ए प्रोग्रामर आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट. इसकी कोडिंग को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ कि मैं इसको जनरलाइज्ड कर दूँ एक्सप्रेसिंग वाई के लिए. ठीक है, क्योंकि वो कोड जो है दैट इज़ इन मशीन रीडेबल फॉर्म. मशीन ही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है. सो बीइंग अ प्रोग्रामर आई कैन नॉट गोइंग टू चेंज दैट इम्प्लीमेंटेड कोड. ठीक है, जब मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकती हूँ उस प्रोग्राम में जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो वो मेरे लिए इतना फ़ायदा नहीं देगा. ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर लाइब्रेरी के फंक्शंस को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एनहेंस्ड कर सकते थे, उनमें एडिशन कर सकते थे, तो दे कैन बी मच मोर फ्लेक्सिबल, बट दे आरंट. ठीक है,
In implementation, whenever a predefined function is not supporting user requirements, then go for user defined function. ज़ाहिरी बात है, अगर आपके पास लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं वो यूज़र के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, naturally you will need user defined functions. So these are the some limitations which are with the library functions. That's why we switch to the user defined function. User can create their own function by using the user defined function approach in C++. Okay, now what are user defined functions? These functions are created by a programmer according to their requirement. For example, suppose you want to create a function or add two numbers, then you create a function with the name sum. This type of function is called a user-defined function. I have already shared the practical work for this sum function. You can check it, you can run it, and you can apply it on your own. ठीक है, तो आपको इससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि what is user-defined function and how we will create them. ओके, कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शन. एवरी फंक्शन जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन है या चाहे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, लेकिन दे विल हैव सर्टेन कंपोनेंट. अ फंक्शन यूजुअली हैज़ थ्री कंपोनेंट्स. दे आर फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल. ठीक है, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन प्रोटोटाइप, व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ अ फंक्शन कॉल, बट आई एम रिपीटिंग it again because it is included in your the object oriented programming as well. And as you know that you will come across with the member functions in classes. When you will write your classes, you have to write the member function. So if you are not aware of the member functions, you can you if you are not aware of the functions, then you cannot write your member functions for the class. So you have to understand the user defined function in detail so that you are able to write your own member functions for various classes. So every function will have three components: function prototype, function definition and function call. Now what is a prototype? Prototype जो है ये क्या है? Function declaration informs the compiler about the function's name, type and number of argument it receives and the type of value it returns. You can see here it is the syntax of the function prototype. Here return type means the data type which will return a value of by the function. ठीक है, return type क्या represent करता है? It returns the return type of the function. Whatever the value is returned by the function, return type उसका data type mention करेगा. Next is the function name. ठीक है, every function will have a name. ठीक है, which will uniquely identify that function, right? So whenever we will call a function, we will need the name of the function and a parameter list, right? So and here every function declaration or a prototype ends with a semicolon, right? Here in the example you can see we have a function void display and character, and here is another declarator int sum and within the parenthesis int comma int, and that ends with a semicolon. So these both are the prototype. One display a character, right, and it will whenever we will call it we will pass a character to it, right, and its return type is void. When something declared is void, it means it will return nothing to the calling area. And if a data type is mentioned, so it means that the function will return a type of a value, whether it is int or float or character, whatever it is, right? So here in the definition you can see the two declarators located, right? So these are the two function declarators. Next is function definition. Okay, function definition is nothing but give body of the function. That means writing logic inside the function body. Here we will write the task of the function. What is the task of your function? That is represented by the function definition,
right? So here you can see the function definition. It is just like a function declarator or a prototype, but it will have a body. Declarator has no body, and declarator ends with a semicolon. Body will not end with a semicolon. You will have a complete body, right? You can see return type, then followed by a function name, then within the parentheses here is a parameter list, and then it is followed by the curly braces which represent the function body. This is the function definition, right? You can see it, look at it. Return type means I told you that a function may return a value. The return type is the data type of the value the function returns. रिटर्न टाइप पैरामीटर्स और रिटर्न स्टेटमेंट्स आर ऑप्शनल, ठीक है। रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स दे आर ऑप्शनल, यानी एक फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जब करेगा तो उसका कोई रिटर्न डेटा टाइप होगा, अगर नहीं करेगा तो फिर वो वाइड होगा। इसी तरह एक फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो उसको हम पैरामीटर्स पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब अगर हम पास कर रहे हैं पैरामीटर, देन वी नीड टू show the data type of those parameters in the parentheses. Okay, function name, I already told you that it will be identifier, which will identify the name of the function, and it will represent your function by some name. Parameter, this is the value which is passed to a function at the time of calling of a function. A parameter is like a placeholder, it is optional. And then a function body. Function body is the collection of statement where you will write the task for that function, right? Okay. Return statement. You should know that whenever you write a return type for a function, then the body must include a return statement. अगर आपका फंक्शन ऐसा है कि वो कॉलिंग एरिया को कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसका कोई रिटर्न टाइप होगा उस फंक्शन का, और अगर रिटर्न टाइप है तो फिर आपके फंक्शन की बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट होना लाजमी है, ठीक है। हियर यू कैन सी int sum. Sum is the function. First int represent the return type of the function, and within the parenthesis int x and int y. X and y, these are the two arguments which are type integers. So whenever you will call this function, you have to pass two values to this function, ठीक है। यानी जब हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे इसको हम दो वैल्यूज़ x और y पास करेंगे। x और y जब सम होंगे उसका जो रिज़ल्ट है वो s में स्टोर होगा। रिटर्न, now return is the reserved word. Return s will what it will take the value from the function to the calling area. जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर इस वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। सो आप इस प्रोग्राम को देख लें। मैंने प्रैक्टिकल वर्क में रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट किया है, प्रैक्टिकली किया है। आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल, ज़ाहिर बात है व्हेनेवर वी विल नीड अ फंक्शन वी विल कॉल इट, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन कॉल statement calls the function by matching its name and arguments. A function call can be made by using function name and providing the required parameters, ठीक है। सिंटैक्स फॉर अ फंक्शन कॉल क्या है, आप देखते हैं कि हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं और सेमीकोलन लिखते हैं, और हम फंक्शन को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं विदाउट असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल, और हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को एक वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम एंड देन आर्गूमेंट, लेकिन वो फंक्शन जिसको आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं इसका मतलब है कि उस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप होगा, क्योंकि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न पे आपको कोई वैल्यू ला के देगा जिसको असाइन किया जाएगा टू द वेरिएबल, राइट। Here you can see display of a. Now display is the function and a is the parameter we are passing to it, and here s is equal to sum of xy. Now xy, these are the two parameters or arguments, इनकी values पास होंगी, ठीक है। और
जब सम फंक्शन को कॉल किया जाएगा और वहाँ पे जब फंक्शन बॉडी में वट एवर द टास्क इज़ उसकी कैलकुलेशन होगी, तो रिटर्न बैक जब किया जाएगा तो सम की जगह वैल्यू आएगी। ये वो वैल्यू होगी जो इस फंक्शन ने हमें रिटर्न की, राइट, and then it is assigned to sum. So this was a brief introduction about the functions. I hope you will understand it. Now you study the lecture by yourself, and if you have any problem you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.